हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नॉलेज एंड क्विज यूनिवर्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ कंट्रीज। जब कोई कंट्री कोई कम्युनिकेशन जारी करती है या नोटिफिकेशन जारी करती है तो वो किस लैंग्वेज में करती है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ कंट्रीज के अलावा देयर कुड बी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ रीजन्स इन द कंट्रीज, दैट इज डिफरेंट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री। ये टॉपिक अगर आप एक तो जनरल नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर्टिकुलरली फॉरेन सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हैं, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। सिंगापुर की आधिकारिक भाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर? तमिल, इंग्लिश, मलय या मैंडरिन चाइनीज? The correct answer is all these languages. Singapore has these official languages: Tamil, English, Malay, and Mandarin Chinese. ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of Brazil? English, French, Portuguese, or German? The correct answer is Portuguese, पुर्तगाली। ये ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कनाडा की आधिकारिक भाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कनाडा? इंग्लिश, फ्रेंच, शाइपफैन और क्री? The answer is English and French. English and French are the official languages of Canada, while Shaifan and Cree are the regional languages of Canada. फिनलैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of Finland? English, Finnish, Swedish, or all of the above? The correct answer is Finnish and Swedish. English is a widely spoken language, but the official language of Finland is Finnish and Swedish. आइसलैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of Iceland? English, French, German, or Icelandic? The correct answer is Icelandic. The Icelandic ही एक भाषा है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आइसलैंड में। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of India? English, Hindi, Sanskrit, or all of the above? The correct answer is English and Hindi. English और हिंदी के अलावा there are 22 official languages for different states and regions of India. जहाँ तक कि हमारी कंट्री का सवाल है, at the national level the official languages are English and Hindi. However, there are 22 official languages for different states and regions of India. स्विट्जरलैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of Switzerland? The options are Swiss, French, German, or Italian? The correct answer is French, German, and Italian. Swiss ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है, and the 4 official languages are German, French, Italian, and Romansh. यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of United Kingdom? English, Irish, Scottish या Welsh? So the correct answer is English and only English at the country level. All the communication happens only in English. Irish, Scottish, Welsh are regional languages of United Kingdom. संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of United States of America? English, Spanish, French, or all of the above?
The correct answer is English, and there are 28 regional languages in United States of America, but at the national level, English is the official language of communication. श्रीलंका की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of Sri Lanka? English, Sinhala, Tamil, or all of the above? The correct answer is Sinhala and Tamil. Tamil एक और कंट्री की आधिकारिक भाषा है जो हमने पहले ही कवर कर चुके हैं, that is Singapore. So Singapore and Sri Lanka, they both have their at the country level official language. Tamil is also one of the other languages. While in India, Tamil is a regional language, while English and Hindi are the languages used for official communication at the country level. दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of South Africa? Afrikaans, Swazi, Zulu, or Songa? The correct answer is all of these. Actually, there are 11 official languages in South Africa, जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, and these are the so many languages, इतनी सारी languages, official languages हैं at South Africa. फिजी की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of Fiji? English, French, Fijian, or Fiji Hindi? The correct answer is English, Fijian, and Fiji Hindi. So the interesting part is Hindi, which is the official language of communication in India, one of the official languages apart from English. Fiji Hindi, Fiji में भी बोली जाती है. It is a Indo-Aryan language spoken by Indo-Fijians, and this language is highly influenced by Bihari language. तो वहाँ पे जब हमारे कुछ Indians काफ़ी सालों पहले जो वहाँ पे सेटल हो चुके हैं, वो लोग ये भाषा बोलते हैं, और फिजी हिंदी बिहारी भाषा से बहुत प्रभावित है. Before we go to the next question, if you find my videos useful, then please consider to subscribe to this channel for more such content. Let us continue with the next question. इज़राइल की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of Israel? Hebrew, English, Russian, or all of the above? The correct answer is Hebrew. यहूदी भाषा, हिब्रू भाषा इज़राइल की ऑफिशियल लैंग्वेज है. इटली की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of Italy? Italian, Albanian, Sardinian, or Greek? The correct answer is Italian. बाकी सारी भाषाएं रीजनल भाषाएं हैं. All other languages are regional languages of Italy. Albanian, Sardinian, Greek are the regional languages of Italy, while Italian is the official language at the national level. जापान की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of Japan? Japanese, Chinese, Korean, or English? The correct answer is Japanese and only Japanese. They do not have any other language spoken. They have their official languages only Japanese. मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of Maldives? Urdu, Arabic, English, or Divehi? And the correct answer is Divehi. Though it is a Muslim dominant country, but Urdu, Arabic are not the languages at official level. They have their own language called as Divehi as the language used for official communication. अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of Afghanistan? Urdu, Arabic, Persian, and Pashto. These are the options.
एंड द करेक्ट आंसर इज पर्शियन एंड पश्तो। फारसी एंड पश्तो भाषा का उपयोग किया जाता है अफगानिस्तान की ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज दरी पर्शियन। इट इज द वेराइटी ऑफ पर्शियन स्पोकन लैंग्वेज इन अफगानिस्तान। अगेन जैसे मालदीव्स की तरह ही इवन अफगानिस्तान इज अ मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री, लेकिन वहाँ पे भी उर्दू और अरबिक का इस्तेमाल नहीं है। अदर दैन उर्दू एंड अरबिक यहाँ पे पर्शियन और पश्तो का इस्तेमाल किया जाता है फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। बेल्जियम की आधिकारिक भाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बेल्जियम? डच, फ्रेंच, जर्मन और ऑल ऑफ द अबव? And the correct answer is all of the above. Dutch, French and German are the official languages of Belgium. डेनमार्क की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of Denmark? Danish, Faroese, Greenlandic or German? The correct answer is Danish और बाकी की सब Faroese and Greenlandic are regional languages. German वहाँ पे नहीं यूज होती है at official level. So Danish is the official language and Faroese and Greenlandic are their regional languages. जर्मनी की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of Germany? German, Danish, Sorbian और Frisian? The correct answer is German. At the national level, at the level of the country communication, German is the language that is used there for official communication. बाकी सभी क्षेत्रीय भाषाएं हैं. Danish, Sorbian, Frisian are the regional languages of Germany. न्यूजीलैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of New Zealand? English, Maori, French और Italian? The correct answer is English and Maori. These are the two languages which are used for official communication in New Zealand. वेनेजुएला की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of Venezuela? English, Spanish, Greek or French? The correct answer is Spanish. Spanish is the official language of Venezuela. किस देश में सर्वाधिक आधिकारिक भाषाएं हैं? Which country has the maximum number of official languages? Bolivia. Bolivia has 37 official languages. So Bolivia is one such country which has the maximum number of official languages and the number is 37. With this, we have come to the end of this video. We covered many important countries and their official languages. I hope you got to learn something. Please like, share and subscribe to this channel for more such content. Thank you for watching. See you again.